Hello everyone, welcome back to day 7 of SOC Analyst L1 Masterclass. I'm really glad to have you all here as we continue building our strong foundation in cybersecurity. So as many people are still joining, drop some comments so it will reach out to a broader audience. And I'm seeing your comments. So hello Suraj, whoever joined the stream, make some comments, say hi. So today's session is very important because of we are diving into something that forms the backbone of every server, cloud system, or tools used in the security world, and that will be Linux. As you already know, like what we will be reading today. So we will talk about Linux and why Linux is important, why we need Linux in SOC, or how to use Linux in efficient way. So whether it's SIM tools like Splunk or endpoint tools or log servers, most of them runs on Linux. And as future SOC analyst, as you are want to become, so it's crucial for you to understand how Linux works, how to navigate it, and how to analyze what's happening on these systems. So the agenda of today's session will be what we will going to talk about is what Linux actually is, why it is so relevant for SOC roles, the basic file system structure, right? And assessing some commands where every analyst should know. And of course, at the end, like we are doing some hands-on practice and a assignment for you to solve. Okay, so this will be the agenda for today's session. So without further delay, let me start it. So as I already discussed, like what was the agenda for today. So we will talk about first, let's talk about what is Linux actually. We heard about here and there, I'm using Linux or I'm working on Linux. So what basically Linux is? Can anyone tell me in the comments what basically Linux is? So, without further delay, let me start the session and I welcome you all again. Hello, Hans. Hello, Monica. Hello, Homo sapiens. Hello, Jolie. So, what Linux is actually? In your opinion, what Linux is? So Linux is a open source operating system that based on Unix. As we already using one operating system as you are right now installed in your uh, hardware, which is Windows, but Linux is also an open source operating system. So it powers everything from web servers and cloud systems to Android phones or cybersecurity tools also. And if we talk about the common advantage or the basic advantage of using Linux, like it is free, highly customizable, you can customize according to your need. It is also very secure. So that's why, which makes it to go-to choice for most IT and security environments, right? And one more thing I want to tell you is when we say Linux, so we are actually referring to the Linux kernel. And what is Linux kernel? So the core of the operating system. Around this kernel, different vendors build their own Linux distributions, or we called it as distros. So when I talk about some common distros like Linux distro, Kali Linux distro, Ubuntu distro, CentOS, Red Hat, so these are the distros. And अगर मैं इसमें थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँ कि आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे, लाइक व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशंस आर. सो लिनक्स का जो कर्नल है, जो ओरिजिनल कर्नल है, उसको अलग अलग वेंडर्स ने मॉडिफाई किया. जैसे काली लिनक्स या काली जो वेंडर है, उसने लिनक्स के कर्नल को सिक्योरिटी टूल्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया. उसने लिनक्स का जो ओरिजिनल कर्नल था उसमें सिक्योरिटी टूल्स ऐड किए और उसको एक अलग से लॉन्च कर दिया जिसको हम काली लिनक्स के नाम से जानते हैं. ऐसे ही आपके पास रेड हैट जो वेंडर था, उसने रेड हैट लिनक्स लॉन्च किया. उबंटू वेंडर्स ने उबंटू लिनक्स लॉन्च किया. अमेजोन ने अमेजोन लिनक्स लॉन्च किया.
Fedora, CentOS, OpenSUSE, Viata. There are many Linux distros are available, which basically customized Linux kernel according to the industry requirement. ओके, सो हम भी इनमें से एक डिस्ट्रो के ऊपर अपनी बात करेंगे और उन्हीं उसी डिस्ट्रो के ऊपर अपनी कमांड्स को रन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी कमांड आप चला सकते हो, बेसिकली आप लिनक्स का यूज़ कैसे करोगे। ये अपना एजेंडा होने वाला है। तो लिनक्स की अगर मैं कमांड की बात करूँ तो लगभग लगभग सभी लिनक्स डिस्ट्रो में जो कमांड्स हैं वो सेम ही हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उबंटू के लिए कुछ और कमांड सीखना पड़ेगा, काली लिनक्स के लिए कुछ और कमांड सीखना पड़ेगा, या रेड हैट के लिए कुछ और कमांड सीखना पड़ेगा। आप लिनक्स की जो कोर कमांड्स हैं अगर उनकी प्रैक्टिस करते हो सो वो सभी लिनक्स डिस्ट्रो पर एक जैसी ही वर्क करेंगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है। सो अगर हम कुछ और जैसे कि कुछ लोग कुछ कमेंट्स आई एम सीइंग लाइक समवन इज सेइंग इज प्लीज प्लीज थ्रो सम लाइट्स ऑन कॉमन डिस्ट्रोज। सो यस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। So there are some common distros, which is first is Kali Linux. So it is used for penetration testing distribution. Like हम इसी को क्यों यूज करते हैं, एज एन जब भी आप किसी सिक्योरिटी पर्सन, एथिकल हैकर या पेनिट्रेशन टेस्टर से बात करोगे तो वो आपको ये बोलेगा कि मैं काली लिनक्स का यूज़ करता हूँ, या फिर मैंने ये टूल काली लिनक्स के ऊपर बिल्ड किया है, या फिर मैं काली लिनक्स के थ्रू ये पर्टिकुलर टास्क या अपनी टेस्टिंग परफॉर्म करता हूँ। तो वाई द पर्सन चूजेस काली लिनक्स? काली लिनक्स एक डिस्ट्रो है जो कि लिनक्स कर्नल के ऊपर डिजाइंड है। और क्यों है ऐसा? क्योंकि काली जो वेंडर है उसने सिक्योरिटी में काम आने वाले असेंशियल टूल्स को पहले से ही इनबिल्ट किया है। ऐसा नहीं है कि हम सिक्योरिटी के लिए किसी और लिनक्स का यूज़ नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, बट जो भी आपको टूल्स का रिक्वायरमेंट होगा, जो भी आपको फ्रेमवर्क चाहिए होंगे, जो भी आपको स्क्रिप्ट्स चाहिए होंगी, उनको आपको मैनुअली उस डिस्ट्रीब्यूशन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट जब आप काली लिनक्स की बात करते हो तो उसमें वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है। जैसे आपने nmap का नाम सुना होगा, आपने मेटास्प्लोइट का नाम सुना होगा, आपने एसक्यूएल मैप का नाम सुना होगा। ठीक है, तो कॉमन जितने भी आपके सिक्योरिटी टास्क में काम आने वाले, चाहे वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गई, चाहे वो मॉनिटरिंग हो गया, या फिर आपका सोशल इंजीनियरिंग टूल किट्स हो गए, या फिर आपके वाईफाई टूल किट्स हो गए, या फिर आपके पास इन्वेस्टिगेशन टूल किट्स हो गए, सब की सब पहले से ही काले लिनक्स में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपको एडिशनली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। एक और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है रेड हैट। तो रेड हैट का भी एक एंटरप्राइज वर्जन आता है जिसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ ऑफ कोर्स ओपन सोर्स एंड फ्री। तो रेड हैट का जो यूज़ है वो जनरली आपके क्लाउड एनवायरनमेंट में, या कुछ आप डिप्लॉय करना चाहते हो, सर्वर बनाना चाहते हो, उसमें ज़्यादा होता है। ऐसा कह सकते हो आपकी इंडस्ट्री में हम रेड हैट का यूज़ ज़्यादा करते हैं। देन सेम आपके पास उबंटू आता है। सो उबंटू के भी आपके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इंडस्ट्री। सो आप यहाँ पे देखोगे कि हम जो कॉमनली यूज़ करते हैं वो उबंटू डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, बट आपके पास उबंटू सर्वर भी आता है, उबंटू प्रो है, उबंटू कोर है, देन आपके पास FIPS है, WSL है। सो दीज आर द कॉमन लिनक्स डिस्ट्रोज। ओके, और इन्हीं में से हम एक डिस्ट्रो की बात करेंगे, या एक डिस्ट्रो पे हम काम करेंगे, विच इज काली लिनक्स। तो आपको काली लिनक्स अपने सिस्टम में डाउनलोड करना होगा एंड देन यू हैव टू इंस्टॉल इट। अगर आप इसको अपने कोर हार्डवेयर पे इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको इंस्टॉलर इमेज चाहिए, विच इज दिस। आप इंस्टॉलर इमेज पे जाओगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, सो इस इमेज को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये एक ISO फाइल है एंड देन यू कैन इंस्टॉल इट ऑन योर हार्डवेयर। इट इज कंपेटेबल विद एवरी हार्डवेयर। So whatever hardware you have currently right now, you can install it. But अगर आपको Windows भी चाहिए and then still you want to use Linux, तो आपको फिर virtualization टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। In that case you can use VMware और VirtualBox। तो आप VMware वर्कस्टेशन का यूज कर सकते हो। इट इज ए वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप अपना कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। सपोज करो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्वर चाहिए, या फिर आपको एडिशनल लिनक्स चाहिए, कोई सा भी लिनक्स का डिस्ट्रो चाहिए, एक नहीं एक से ज़्यादा चाहिए, तो भी आप वर्चुअलाइजेशन की टेक्निक की मदद से उसको इंस्टॉल कर सकते हो। सो आपको आई होप ये इंस्टॉल करना आता होगा। अगर आपको ये इंस्टॉल करना नहीं आता है तो मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूंगा कि हाउ टू इंस्टॉल वी काली लिनक्स और उबंटू और रेड हैट इन VMware।
ओके, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। ऑल यू नीड इज VMware फाइल। आपको VMware सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, विच इज़ ऑफ कोर्स विंडोज 10 या 11 जो भी आप यूज़ कर रहे हो। उसके बाद VMware के अंदर आपको काली लिनक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा एज नॉर्मल, जैसे आप नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, कुछ वैसा ही। इसके अलावा अगर आप VMware का यूज नहीं करना चाहते तो आप वर्चुअल बॉक्स का भी यूज कर सकते हो। वर्चुअल बॉक्स इज ऑल्सो डेवलप्ड बाय ओरेकल, और ये भी एक वर्चुअलाइजेशन टेक्निक का यूज करता है। तो वर्चुअल बॉक्स है, VMware है, या फिर आप हाइपरवाइजर का भी यूज कर सकते हो, विच इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो 3 वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर हैं आपके पास, और इनका यूज करके आप काली लिनक्स को या आप अपने लिनक्स को बिल्टअप कर सकते हो। आ रहा है कुछ समझ में? ठीक है। तो इंस्टॉलेशन होने के बाद हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वाई लिनक्स फॉर एसओसी, लाइक हम लिनक्स पे ही क्यों इतना फोकस कर रहे हैं, हम विंडोज़ का यूज़ नहीं कर सकते? क्या आप कर सकते हो, बट जो आप एसओसी के अंदर टूल्स यूज़ करने वाले हो, लाइक जो सिम टूल्स आप यूज़ करने वाले हो, या आप IDS इंट्रूसिव डिटेक्शन सिस्टम या इंट्रूसिव प्रिवेंशन सिस्टम आप यूज़ करने वाले हो, नेटवर्किंग टूल्स यूज़ करने वाले हो, वो लगभग लगभग लिनक्स पे इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं। ठीक है। अगर आप उन्हीं सब टूल्स को विंडोज़ में इंस्टॉल करना चाहोगे तो एक तो आपको उनको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा, दूसरा वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे जैसा लिनक्स पे करते हैं। तो इसलिए आपको लिनक्स की ज़रूरत है, और हम लिनक्स का यूज़ लॉग एनालिसिस, थ्रेट हंटिंग और मालवेयर एनालिसिस के लिए करेंगे। तो इसलिए लिनक्स पे थोड़ा सा आपका कमांड होना, लिनक्स की कुछ कमांड्स का याद होना, और लिनक्स पे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना इज असेंशियल है। इसका यूज आप SSH, स्क्रिप्टिंग, ऑटोमेशंस सब में कर सकते हो, क्योंकि दीज आर लिनक्स बेस्ड, और अगर आपके पास एक लिनक्स डिस्ट्रो होगा तो आप इजीली उसको कर पाओगे। आया कुछ समझ में? ठीक है। अगर आपको इतना कुछ समझ में आ गया है तो अब हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। सो सबसे पहले लिनक्स के बेसिक फाइल स्ट्रक्चर को समझते हैं। लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ लिनक्स, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू शो यू हाउ लिनक्स लुक्स लाइक। So let me switch to my window. So this is the Linux, and this is called terminal. So when you open Linux or when you install Linux or logged in with your ID password, I'm using Kali Linux right now. So this is the Kali Linux, and on the upper corner you will find a icon which indicates terminal emulator. So what this terminal emulator? This is the command line. So you use this command line to give the command to the operating system. So whatever command you will type here in this terminal, it will execute on the operating system and give you the output. Just like you have command prompt in the Windows operating system. CMD, I mean. So when you use CMD, you give some instruction or command to the operating system, it will get executed and you will get the output. Just like CMD, we have terminal in the Linux operating system. Okay, so you have to type every possible command here, but before that you need to understand the structure of Linux, the file system structure. Okay, so what this file system structure is actually, so I'm going to tell you everything, but see, this is the file system structure. So this path is called root path. Root path this is, and this is the path where every directory, every possible directory will create. You can say like every system files, binary files, user files, temporary files, everything located in the root path. So this is the root path, and under the root path there are several directories are already created, which is bin, boot, etc, home, and then media, root, every directory, right? So we have to understand, or we have to get some information about why these directories are used. Like if we're talking about say like etc, so why etc is used? When you know about the file system structure, you will understand Linux more efficiently. So let me tell you some basic
file system structure. So this is the some file system structure outlines. So slash is indicates root directory. Then under the root we have home directory, which contains user files. The every user you will create, it will creates a directory under the home. Okay, then we have etc directory, which commonly used for configuration files. All the configuration files you will found it here. Then slash var slash log, this is the system log files. All the logs will be located here. So this particular directory or location is very important for SOCs. You have to dig more deep in this directory. And then slash bin slash sbin, these are the system binaries, right? The binary files are stored here. And then slash temp, which is used for storing temporary files. But these are not the whole file system structure. As I showed you earlier, we have a multiple file system structure, file directories more. So you should read about the Linux file system structure, like what slash root will do, like what slash media will do, slash usr will do, right? Every possible file system structure you have to read about it, because it is very essential. जब आप इसको पढ़ोगे, so you will get the idea about the लिनक्स स्ट्रक्चर, क्या लिनक्स कैसे बनाया गया है और कौन सी डायरेक्टरी किस लिए काम आती है. सो यू विल गेट दैट आइडिया. होप आई होप इट्स वेरी क्लियर. नाउ moving on, we have to practice, or we have to learn, or we have to do some hands on with these simple basic commands. So I'm going to show you how these commands work and what will be the meaning of these commands. But before that, let me take some questions on chat. So the persons, those who are joining or watching this video, please must like the video. I'm right now seeing like you didn't like the video, so make sure you will like it. And so Varis Khan is saying, can we go with the Ubuntu, not for the SOC Corso Labs? Yes, you can use the Ubuntu as well, but some particular tools you need to install it Ubuntu. Ubuntu is not like not tools are not pre-installed, so you have to install it manually. One more question I get is like the person saying, can I start the SOC alongside with the CEH course? Of course. And you should read about the CEH first, because when you read about CEH, it will boost your basic knowledge and all the attacks. You will familiar about what are the attacks, what is footprinting, what is scanning. So you must read about the CEH before starting SOC or alongside with SOC. And one more question I'm getting repetitively is like, why if I should continue the session in English or Hindi? So see, the audience are like Hindi or English both. So I will continue the session in some part in English or some part in Hindi. Otherwise, whenever I speak Hindi, so you can turn the subtitles, so it will automatically translate what I'm saying to you. Okay, so now let's moving on. So these are some basic commands, which is pwd, ls, cd, touch, mkdir or rm. So let's move on with the very first command, which is pwd. So this is known as print working directory or present working directory. When you run this command, you will get to know about the idea where your current path is. So when you run this, you will get your current path. So let me show you. So suppose right now when I use pwd, so it will displays my current path. So my current path is slash home slash kali. That means I am right now present here. Whatever new directories or new files I will create it, वो यहाँ पर आएंगी, काली के अंदर आएंगी. ठीक है. और काली आपका जो डायरेक्टरी है वो बना हुआ है होम के अंदर, और होम किसके अंदर है, वो है स्लैश यानी रूट के अंदर. सो इसका जो कंप्लीट पाथ है विच इज स्लैश रूट एंड देन उसके अंदर होम एंड देन उसके अंदर काली.
और अगर मैं यहाँ पे कोई भी फाइल बनाऊंगा तो वो यहाँ पर आएंगी। सो सपोज अगर मैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में होता और यहाँ पर मैं आपको मान लो कि PWD रन करूंगा, सो ये मुझे आपका पाथ बताएगा। सो पाथ को आइडेंटिफाई करना इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर आप मल्टीपल डायरेक्टरीज में काम कर रहे हो, सो यू विल, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पाथ आपका करेक्ट पाथ है। सो अपने पाथ को आइडेंटिफाई करने के लिए वी विल यूज PWD कमांड। ओके, PWD is present working directory or current working directory. It will print your current directory basically. Moving on, the next command is ls. So the ls is basically used for listing all the files and directories that are present right now. Right now I am in the Kali directory, and if I run ls here, which means list, so it will list all the available files, all the available directories in that Kali directory. So these are all the directories or files I have in my Kali directory, not Kali operating system, Kali directory, right? You are seeing some blue directories, and these are the files, text files, and these are the files which have special permission. Okay, so whenever you see the files, whenever you see a directory, if you want to list out the content which are available in the directories, you can use ls command, which is which means listing all the files. बिकॉज लिनक्स में डायरेक्टरी और टेक्स्ट फाइल्स को या कोड फाइल्स को फाइल्स ही बोला जाता है। सो हम जब बात करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं लिस्टिंग द फाइल्स, नॉट लिस्टिंग द डायरेक्टरी और फाइल्स, लिस्टिंग फाइल्स। ओके, द नेक्स्ट कमांड आई हैव which is cd. cd means change directory. सो अगर आपको अपनी डायरेक्टरी से किसी दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, इफ यू वांट टू स्विच फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर, यू विल यूज स्विच, सॉरी cd, चेंज डायरेक्टरी। सो सपोज मुझे डाउनलोड्स में जाना है, सो आई विल टाइप डाउनलोड्स, एंड देन इफ आई हिट एंटर, माई डायरेक्टरी विल चेंज्ड इनटू डाउनलोड्स, एंड नाउ इफ आई रन ls here, इट विल डिस्प्ले द कंटेंट अंडर द डाउनलोड्स। डाउनलोड के अंदर जो कंटेंट होगा वो मुझे डिस्प्ले होगा, बिकॉज मैंने cd के थ्रू उसको चेंज कर दिया था। सो cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी। अगर आपको सपोज करो कि डाउनलोड के अंदर भी कहीं जाना है, जैसे डाउनलोड के अंदर भी आपके पास एक डेमो1 का डायरेक्टरी है, एंड यू वांट टू स्विच इट इनटू द डेमो1, सो आप लिख सकते हो cd डेमो1, एंड नाउ यू कैन सी माय डायरेक्टरी, माय पाथ इज चेंज टू डेमो1, एंड इफ आई रन pwd here, दिस विल बी माय होल पाथ। ठीक है, तो cd की मदद से आप अपने डायरेक्टरीज को चेंज कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि अगर हमने डायरेक्टरी को स्विच किया, चेंज किया, तो हम उससे एग्जिट कैसे करेंगे या बाहर कैसे आएंगे? सो फॉर दैट यू विल यूज cd डॉट डॉट। cd dot dot means one directory back. So if I hit enter, it will take me to the previous directory, which is downloads. So now I am into the downloads. If you run the pwd here, you will see I'm into the downloads. So cd dot dot is used for one directory back. And now suppose I'm going with the demo1, and I want to switch my directory to my home directory. Basically, I do not want to present in the downloads as well as in the demo1. So I have to take two directories back, and for that you will use dot dot slash dot dot. That means two directory back. So suppose if you need to switch four directories, then you will use that command like this: cd dot dot slash dot dot, that means two directories, and then dot dot, which means three directories, and then dot dot, which means four directories. But right now we have only two, so if I hit enter, my path will be changed, and right now I'm into the home Kali. Download and demo1 is backed. Okay, now there is one more command which we use in cd. Suppose if I go to demo1, and then in the demo we have some certain files. Okay, so so this is the file 1, and if I create suppose a directory here which is demo2 or demo3, and now I switch to the demo3 again, and so my current path right now is this.
demo 3 which is under demo 1 which is under downloads, and downloads which is under Kali. Now I want to switch my directory into the Kali again, but I do not want to type the cd dot one. So if I want to take all directories back, what I have to do, I have to only type cd and then hit enter. So if you type cd without any further arguments or without any further options, it will take all directories back. So cd means if you run cd as a command, it will take all directories back. Okay, as you see, if I run cd, all directories will be backed, and now I'm into the home path again. I hope आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा. Is there any problem right now? Okay, so moving on, the next command we have is touch. So what touch is used for? So I'm switching to the demo one because the whatever I want to create is we can create it here. Okay, so now if I want to create some files over here, I will use touch. So touch command will create empty files. The file you will create it will be empty, or it doesn't contain any content. If you want to edit or put some content, we have some editors available, but using touch you can create empty files, right? And you when you want to create empty files, you have to specify the file name. So suppose I want to create a file with the name file.txt, so you have to type touch space file.txt, and as soon as you hit enter, the file will be created. You can see it. Suppose you want to create not only one files but multiple files, so you can type like file1.txt and then file 2.txt and then file 3.txt. So now three files will be created. So file 1, file 2, file 3. So that means if you used touch command and type the name of the file will be created, and there is no content here available here. Like if I try to read the file, like if I try to read the file file.txt, uh, I will not get any content. So the question is like how you will read the content of the file. Using touch you can create it, but if you want to read the content of the file, how can you? So cat will be used. Cat means you can read that file. So if I put the name of the file which is file.txt or file1.txt, and if I hit enter, so there will be no data here. That's why nothing printed. Clear? What if I put some data in it? So for putting some data in it, we need to use some editors. So I'm using the gedit. This is the another command. So using that, I can put some data into the file. So when you open it, the editor will be open, and now I can type whatever I want. So like this is my file, and I can save it. Okay, and then I can close it. So now again, if you want to read it, so you will see content will be displayed using cat because I put some content in that file. So if you want to edit the file, you can use editors, and there are not only gedit we have in the Kali Linux, we have Vim also. Vim is also a Vim editor, and using this you can also create some files or put the content into the file. And how can you do it? You have to use Vim, then file name, and then in insertion mode you can type this is my file 2. Okay, and then escape it, and with the colon wq, which is used for write and quit. And now if you read the content of file.txt, the content will be displayed. Easy? Tell me in the comments like if it is easy or you are facing some problems while understanding it. सो मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि हम इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखें. तो देखो,
कुछ ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है मैंने, कुछ कमांड्स का यूज़ किया है जिनकी मदद से आप अपने जो डायरेक्टरीज हैं उनको एडिट कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो। सो टच की मदद से आप इसको क्रिएट कर पाते हो। लाइक अगर आप टच का यूज़ करोगे तो आपकी कुछ फाइल क्रिएट हो जाएंगी। जैसे सपोज करो कि मैंने लिखा टच और cyber.txt, तो एक फाइल क्रिएट हो जाएगा। और अगर मुझे इस फाइल के अंदर कुछ कंटेंट पुट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं जी एडिट या विम का यूज़ करूँगा। तो मैंने लिखा विम एंड देन फाइल का नाम, और जब आपके पास फाइल ओपन होगी सो यू विल एंटर आई फॉर इंसर्ट मोड, एंड देन यू कैन provide the content which you want to write, and then for save you have to type colon wq. so now the content will be saved here, और आप इस content को अगर पढ़ना चाहते हो तो आप cyber.txt या cat कमांड से इसको पढ़ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? Okay, so now moving on, one question I got is like, what is directory? So directory is like you create folders in your Windows operating system. We do not called folders in Linux, we called it as directory. So in the directory you can put some files, you can put some scripts, you can put some images, whatever document type, media type you have. So directory is like a folder which are basically used for containing some files. So the files are basically stored inside a directory. So you can compare the directory with folders, but in Linux we will not call it as folders or folder, we will call it as directory. Okay, now the next command is mkdir. mkdir means make directory. If you do not want to create files, अगर आप फाइल्स को क्रिएट नहीं करना चाहते, आप कुछ नई डायरेक्टरीज बनाना चाहते हो, so for that you will need a command mkdir, that means make directory. एंड जब आप इसका यूज करोगे सो आपका एक नया डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा। सपोज मैंने लिखा mkdir टेस्ट, सो आपका एक नया डायरेक्टरी क्रिएट होगा विच इज like this. And now if I list it, you will see कि एक टेस्ट नाम का जो डायरेक्टरी है वो बन चुका है। आया कुछ समझ में? mkdir की मदद से हम इसकी डायरेक्टरी को बना सकते हैं। आप अगर को आपको मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट करना है, सो आप कुछ इस तरह से भी इसको लिख सकते हो। लाइक मैंने लिखा कि D1 D2 D3, सो D4 एंड देन D5, सो आपके पास मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट हो जाएंगी। So basically you just need to provide or type the directory name using mkdir and a directory will be created. Suppose करो कि suppose if you want to remove it, अगर आप इसको remove करना चाहते हैं तो जैसे मान लो कि मैंने test नाम का डायरेक्टरी बनाया था, I created a test directory earlier, and if I want to remove it, so I can use rmdir which means remove directory. आप rmdir कमांड का यूज करके इसको रिमूव कर सकते हो। सो एज सुन एज आई हिट एंटर, the directory will be removed and you will see like there is no sign of test directory here. The test will be removed. बट ये रिमूव इसलिए हो पाया क्योंकि इसके अंदर अभी कोई कंटेंट नहीं था। सपोज आई स्विच टू द D1 and put a file here which is file.txt and hit enter and check with ls. So right now you have the file.txt file inside the D1, and if you want to back with demo3, here the D1 is available, and now if I want to delete the D1, it will not be deleted because now D1 contains some data, and if the data is already available, whatever data you have, चाहे वो एक empty file ही हो, you cannot remove the directory with rmdir. उसके लिए फिर आपको rm का यूज करना पड़ेगा which is used for remove. And now if you provide rmd1, so now again it will be not removed because it is a directory. आप rms की मदद से फाइल का यूज कर सकते हो, बट हम rm कमांड का ही यूज करेंगे और हम इसमें एक एडिशनल ऑप्शन अप्लाई करेंगे विच इज -rf, विच मीन्स फोर्सफुली रिकर्सिवली।
recursively forcefully. That means it will remove all the content inside the directory forcefully. And now if I provide d1, it will be removed successfully and you can check it out. Got it? इजी है। ये कुछ बहुत बेसिक कमांड है, इनको आपको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लिनक्स को ऑपरेट करने के लिए इन कमांड्स की आपको नीड पड़ेगी। लाइक जब भी आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हो, सो आपको उसका बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। टूल्स आप बाद में चलाओगे, बट टूल्स को नेविगेट करने के लिए, फाइल बनाने के लिए, सेव करने के लिए, डिलीट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए आपको लिनक्स का बेसिक कमांड नॉलेज होना चाहिए। and these all commands are used for. So if I type one more time the basic commands we have, so let me quickly give you a recap. So pwd for present working directory, ls for listing, and then cd, then we used cd dot dot, then we also used cd dot 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 dot, then I used a simple cd which I typed earlier, then I used touch. So using touch you can create files, using rm you can remove files, you can mkdir with create directories, you can use rmdir to remove the directory but empty directory only, right? You can use rm-rf using to remove the non-empty directories, right? इसके अलावा vim to edit the file, cat to read the file, and then gedit, which is also used for edit the file in graphical way. So these are the basic commands we talked about till now. Tell me in the comments if you are familiar with these commands and if you want me to add some more basic commands which you will need, like the copy command, the move command, or suppose if you want to rename a file, so how can you do it? So tell me if you know the command for renaming a file. If you want to rename a file, so how can you do it? How can you rename a file? Suppose this is my file. Let me Okay, so this is my file which is file.file3.txt, and now I want to rename it. So what option I will use for rename that file, or what command I will use? Tell me in the comments if you are familiar with, like, how can you rename this file. Suppose this file name is file3.txt and now I want to rename it as file5.txt. So what command I will use? How to rename a file? I'm waiting for your answer, guys. देखो, जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। सो मेक श्योर कि हम इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाएं। अदरवाइज देखो, लाइव सेशन को होस्ट करने का फायदा ये है कि आप यहाँ पर क्वेश्चन पुट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। मैं इसको रिकॉर्ड करके भी पुट कर सकता हूँ, बट उसमें आपको इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप थोड़ा इंटरेक्टिव बनो, ठीक है? आप क्वेश्चन पुट करो, आप जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो। सो थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, सो आई विल ऑल्सो गेट सम इंटरेस्ट। अदरवाइज वो ऐसा लगता है कि मैं एक सेशन ले रहा हूँ एंड देन यू आर नॉट पर्टिकुलरली वॉचिंग और सीइंग और अंडरस्टैंडिंग। Okay, so make some comments, do the answer. How can I rename the file? With file3 is the original file name, and now I want to rename it as file5.txt. So what command I will use to rename the file? So Anvesh is saying vim we can use. So Anvesh, we use vim to edit the file content, not the file name. Okay, so suppose if you use vim or file3.txt, so it will open the file in edit mode. The file name will not be changed. The file will be opened and the file name will not be changed. Or if I type vim file4.txt, like, so it will create a new file, not the previous file will be renamed. So vim is not the answer. Anyone else?
So someone saying he knows 40 to 60 Linux commands, that's good, or I need more. So yes, you need more, because 40 commands are not enough. So what I will do, you can check the resources drive of our stream, and where there you will find a Linux guidebook in which you will have multiple Linux commands, so you can use it. So I got the answer for renaming the file from Monica. Yes, Monica is right. We can use the MV. MV is the command you can use to rename the file. And how can you do it? You have to type MV and then your previous file name, which is old file name, file.txt, and the new file name, file5.txt. And as soon as you hit enter, your file name will be changed or renamed. See, from 3 we got 5. So mv is the command to rename the file. So you have to practice more with these Linux basic commands, and I will attach a Linux guidebook in the resource drive. You can find out the resource drive link in the video description. There will be a session tracker there, and in the session tracker you will see the Linux guidebook. In that you will find multiple commands for multiple operations. Okay, and now let me moving on. Okay, so we talk about all these commands. Now in Linux, after you have the mastery on basic commands, you have to perform some tasks. Like you want to add some users, you want to add a password for the new user, or you want to change the password of your account. You want to switch or navigate to another user, or you want to run the command with the root permission or the file permissions. So these are some more commands you need to perform. So I will tell you these commands one by one. So first command is add user or user add. These both commands are used to create a new user. Passwd, this is used for create a new password or change the password. Su, which is used for switch user. Then sudo, which is run your command as root permission. Then ls-l, which basically used for checking the file permission. And then ls-al, which basically used for checking file permission including hidden files. Okay, so these are some more basic commands, but before I am performing these commands, I want to tell you one more thing. Like in Linux there is a path, and in that path you will find the complete user information, like how many users you have in your system. So the path is, I want to display the path, so I will use cat to read it, and the path or the directory name is cat passwd. Cat etc passwd. Etc is the directory name, passwd is the file name, and in that file every user detail that are available on Linux will be stored. So if I hit enter, you will see some content like this. This is all the details of all the users that are available in the Linux. Okay, so /etc/passwd is, this is one very important path or file which you normally need whenever you want to analyze the users. So here, if I talk to, if I talk about here, so this is the root user, which is the first user of Linux. So in this line, every detail about the root user is defined. In this particular line, there are 7 sections. So the first section indicates the username, the second section used for password, then this is used for user ID, then this is used for group ID. This will be the comment. If you want to comment out anything related to the user, you can use this section. This is the home path where the user is created, and this is the shell, like what user or what type of shell user can use. So these are the 7 information we have: username, password,
user ID, group ID, comment, home directory, and shell information or logged in shell. Okay, so here you will see the root user, daemon user, bin user, sys user. So what basically we have in Linux, we have multiple users. So root is basically having the UID which is 0, and then we have some system users or predefined users. So we have predefined users from 1 to 99, like you see the bin or sys or sync or games. So these are the user ID or UID. So from 1 to 99, these are the predefined user or system defined user. Then we have system users. These UID will be 100 to 999. These are the system users. So if I show you in the output, so this is the system user which having the ID of 120, or this is a system user having ID of 119. Okay, and then your local users are start. So local users are starting from 1000. So right now I have multiple local users created, as you are seeing. So 1000, now my first user will be Kali, so that's why a 1000 UID will be given. And after that I have multiple users like Sam 1001, then Sam 123 with different UIDs. And recently I created a new user which is a skill, so this is the UID of that user. Okay, now I will talk about the commands I showed you in the slides. So what I want to do, I want to add a new user, and for that I need the root account, or I need to switch, or I need to change my user from local user to root, because right now we have the local user. As you see, I'm logging with Kali, but I have to if I want to add some user in the Linux, my user will be root. Okay, so for that I will change the user. So I'm using the sudo su, which is switch user, and default it will take me to the root with the sudo. So if I enter the password, you can say right now I am the root user. If I add the ID command here, so you will get like the UID or some information about the root user, so it is root. Okay, now here you can add a new user with the command add user. As soon as you put a username, so suppose I will create a username with the name of SOC. So SOC will be the username, and if I enter the command, a new user will be added. And when you enter, it will ask the password for the user. So I type the password, then new password, and the some basic information. So full name, room number, work phone, home. And if this information is correct, so yes, or a new user will be created. You can check out in this file, like if the user or user information will be listed or not. So you see a new user or a new entry will be added in the etc passwd file. एक नई एंट्री आपके etc passwd फाइल में ऐड हो चुकी है, विच बेसिकली अभी जो आपने एक नया यूजर ऐड किया था उसकी। सो ऐड यूजर कमांड की मदद से हम एक नया यूजर अपने लिनक्स में ऐड कर सकते हैं और बना सकते हैं। और अगर हम यूजर ऐड का यूज करें तो हमारे पास दो कमांड है, एक ऐड यूजर और एक यूजर ऐड। सो अगर हम सपोज करो कि मैं एक यूजर बना देता हूं एनालिस्ट के नाम से, सो आपका यूजर ऐड हो जाएगा। सो नाउ सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऐड यूजर और यूजर ऐड। Tell me in the comments if you catch the difference between add user or user add. These both commands are used for adding a new user to the Linux. But why we use add user or why we use user add, or if you know the basic difference between those commands. Tell me in the comments if you know the difference between these two commands, which is basically performing the same task, adding a new user to your Linux, but what the basic difference. Hopefully you will catch it when I performed.
Anyone wants to answer it? Why we use user add or uh, add user? That common difference or basic difference. आपको सेशन बोरिंग लग रहा है? यू फाइंडिंग these सेशंस बोरिंग? So why not, why you are not commenting something? Use your hands, make some comment, tell me the answer. Or if you are not know the answer, uh, also let me know in the comments. Why we are using user add or add user? Okay, I got some answers from, like, they are not familiar why we are using user add or add user. So see, let me tell you, when I use user add, the password will be not asked. Like, the user will be created, but the user password will not be created. And when I use add user, suppose I create another user which is SOC1, so it will ask to create a or choose a password for that user. So the difference is, जब आप यूजर ऐड का यूज करते हो तो ये आपका यूजर बना देगा, बट उसका जो पासवर्ड है वो बाद में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन जब आप ऐड यूजर का यूज करते हो तो वो यूजर को ऐड करने के दौरान ही आपसे पासवर्ड पूछ लेगा। जो भी आप पासवर्ड इसका प्रोवाइड कराना चाहते हो वो आप पासवर्ड प्रोवाइड करा सकते हो अलोंग साइड विद द इंफॉर्मेशन। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यूजर के रिगार्डिंग प्रोवाइड करानी है वो आप प्रोवाइड करा सकते हो। लेकिन यूजर ऐड में वो चीज़ नहीं होती, सिर्फ एक प्लेन यूजर क्रिएट हो जाता है। आया कुछ समझ में? Now, if you want to add the password for the user we created, so I can use the passwd command, which is used to reset the password for the user or create a new password. So I created that user which doesn't have any password. So if I hit enter, it will be asked for password. I'm setting a new password here, and the password will be updated successfully. Suppose I want to change a existing user password for with that command, so I can also do that. And now I'm changing the password, so password is also changed. As you see, SOC password is already given, but I want to change it, so I use the command passwd, so it will be changed. Okay, so passwd is the command you will use to change the user password or update the user password. It will work in both ways. Got it? Okay. So after that, we have a command. Now I am not want to use the root, so I switch to my local user again. And now there is command called permissions. So Linux में आपके पास काफ़ी सारी permissions होती हैं जिनकी मदद से आप लिनक्स में जो फाइल्स है और उनके ऑपरेशंस हैं उनको समझ पाते हो। ठीक है, सो परमिशंस की अगर मैं बात करूं तो तीन तरह की परमिशन आपके पास होती हैं: रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। रीड को हम आर से डिनोट करते हैं, राइट को डब्ल्यू से, एंड एग्जीक्यूट को एक्स से। सो बेसिकली द फाइल परमिशन यू हैव इन लिनक्स फॉर एनी फाइल और डायरेक्टरी आर डब्ल्यू एक्स, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। एंड ये जो आपके पास परमिशन है, दीज परमिशंस आर फॉर थ्री टाइप्स ऑफ यूजर। इन परमिशंस के तीन ऑनर हो सकते हैं: द यूजर ऑनर नेम यूजर, द ऑनर ग्रुप ऑनर, एंड द अदर यूजर ऑनर। ओके, सो जब भी आप किसी फाइल की परमिशन को चेक करते हो, सो आपको यूजर की परमिशन भी डिस्प्ले होंगी, आपको ग्रुप ऑनर की परमिशन भी डिस्प्ले होंगी, और आपको अदर यूजर की परमिशन भी डिस्प्ले होंगी। यू वांट टू सी ए डेमो? सो द डेमो इज राइट वे। सी, मुझे सबसे पहले किसी फाइल की परमिशन चेक करनी है तो मैं कमांड का यूज करूंगा ls-l। दैट मीन्स यू वांट टू लिस्ट ऑल द डिटेल्स।
ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा फाइल का नाम, जो भी मेरी फाइल है उसका नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सो लेट मी सी इफ आई नेम सम फाइल। सो आई एम यूजिंग हैश डॉट टी एक्स टी। hopefully you are not seeing in the so I'm running the command again. So hash.txt is my file name, and I want to list or check the permission or the other details of that file. So I will use command ls-l, and when I hit enter, when I execute the command, I will get the permission information. So these are 10 characters. The first character basically defines what type of file is. Suppose this is file name, so that's why a hyphen or dash is there. If it is a directory, or if I put the directory name here with the command, suppose demo desktop, so you will get listing all the information, all the files information which is inside the desktop. सो नाउ टेल मी, सपोज अगर मुझे सिर्फ डेस्कटॉप का ही परमिशन चेक करना हो तो मैं कैसे करूँगा? क्योंकि जब हम ls का यूज़ कर रहे हैं, सो ये डेस्कटॉप की परमिशन को डिस्प्ले नहीं कर रहा, ये डायरेक्टरी की परमिशन को डिस्प्ले नहीं कर रहा, बल्कि ये उसके अंदर के कंटेंट की परमिशन को डिस्प्ले कर रहा है। डेस्कटॉप के अंदर जितना भी कंटेंट है उसकी जितनी भी परमिशंस हैं वो फाइल्स आपके पास आ रही हैं, लाइक दीज आर द फाइल्स, these are the file names, and you will get the permission information here, the owner information, the modification date, the size, the links. but आपको डेस्कटॉप का परमिशन नहीं आया. so that will be your question. if you want to list only directory permissions, so how can you do it? If you only want to list the directory permissions, so how you will do it? That will be my question. How can you list the directory permissions with the command ls? What if we use ls-al and then this? So this is also not showing you the exact output or what output I want. So कैसे हम इसको कंप्लीट करें? ठीक है, एक कमांड और होती है ls-al. तो आपका जो al है वो क्या करेगा कि वो हिडन फाइल्स की परमिशन भी दिखाएगा. जब आप अगर सिंपल एल का यूज कर सकते हो तो वो लिस्टिंग करता है, बट अगर आप ए का यूज करोगे तो वो आपको हिडन फाइल्स भी दिखाएगा, लाइक दीज आर द हिडन फाइल्स विच स्टार्ट्स विद डॉट. सो अगर मैं सिर्फ एल करूंगा तो ये परमिशन नहीं आएंगी. आपकी जो हिडन डायरेक्टरीज हैं उनका परमिशन नहीं आएगा. लेकिन जब आप ए एल करते हो तो हिडन का परमिशन भी आता है. ठीक है, तो परमिशन को लिस्ट करने के लिए हम एल का यूज करते हैं, एंड दिस विल बी द परमिशन. सो तीन परमिशन है आपके पास, तीन तीन परमिशन तीन यूजर के लिए, लाइक दीज थ्री परमिशंस आर फॉर यूजर, दीज थ्री परमिशंस आर फॉर ग्रुप ओनर, एंड दीज थ्री परमिशंस आर फॉर अदर यूजर. एंड यहाँ पर आपके पास तीन तीन परमिशन है. सो तीन तीन के पेयर हैं विच इज RWX, दैट मीन्स यूजर के लिए X का परमिशन मिसिंग है. द X एग्जीक्यूटेबल परमिशन इज मिसिंग फॉर द ओनर ऑफ द फाइल. देन ग्रुप के पास यानी द परमिशन ग्रुप इज हैविंग इज ओनली रीड परमिशन, एंड अदर यूजर इज ओनली हैविंग द रीड परमिशन. सो बेसिकली यूजर जो आपका लोकल यूजर है उसके पास एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है, जो आपका ग्रुप यूजर है उसके पास राइट और एग्जीक्यूट दोनों का परमिशन नहीं है, और आपका जो अदर यूजर है उसके पास भी राइट और एग्जीक्यूट दोनों का परमिशन नहीं. सो परमिशंस को आपको समझना पड़ेगा और तब जाकर आप इन परमिशंस को चेंज कर सकते हो. चेंज करने के लिए कमांड होती है chmod विच इज चेंज मोड. इसकी मदद से आप परमिशन मॉडिफाई कर सकते हो. सपोज आई वांट टू गिव द फुल परमिशंस, सो आई हैव टू टाइप 777 and the file name. So now the file is having full permission. So ये जो आपका मेथड है इसको हम नंबर बेस्ड मेथड बोलते हैं. इसके अलावा आपके पास एक नेम बेस्ड मेथड भी होता है. सपोज आई एम राइट नाउ आई एम चूजिंग एनी अदर फाइल to make you understand. So I'm creating a new one, or let me create a file.txt here.
And if I want to list the permission of this file, so you will see this will be the permission. And now I only want to add the executable permission for user. So what I do, I will use u plus x. So that means I want to grant the executable permission for the user, local user, right? And then the file name. So if you check again, your local user will having the full permission. Similarly, if you want to add, suppose you want to add a write permission to the group owner. So what you will do, you have to use g plus then w. That means you want to give the write permission to the group owner and then your file name. So you will see again the write permission is given. What if you want to remove some permission from group owner? So you can subtract it also. You can use minus, and again your permission will be removed from the group owner. So you can use plus, minus, and equals to. What's the meaning of equals to? If I use g equals to, sorry, g equals to w, so only w permission is given, the previous permission is removed. So when you use plus or minus, the previous permission will not be affected, the new permission you defined will be performed. But if you use the equal operator, so only the new permission will be given to the file, the all the previous permission for that particular user will be removed. Hopefully I will you will understand this. सो देखो, लिनक्स में जब आप कमांड्स की बात करते हो तो वी हैव मल्टीपल कमांड्स, वी हैव अलग अलग चीज़ों के लिए बहुत सारी कमांड्स हैं। तो इन सभी को आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आई कैन नॉट कंप्लीट द कमांड्स इन वन सेशन, सो दैट्स वाई आई डिवाइडेड द लिनक्स सेशन इन टू पार्ट्स। ओरिजिनली आइडिया ये था कि एक ही सेशन में हम इसको कंप्लीट करेंगे, बट एज वी हैव बहुत सारी कमांड्स हैं, वी हैव मल्टीपल कमांड्स to understand, that's why I created this session into two parts, and the next part will be on Monday. Okay, so in that part we will try to understand the process and services, the directories for SOC. So these are the important directories for SOCs where all the logs file will be available, like when you make an authentication or system messages or web server or system log. So you can use these directories, and this will be the assignment for you. So the assignment is I will be upload into your resource directory. You can find it there, and you can also solve it, make a PDF, tag me in the LinkedIn of your solution, so I can shout out your name into the LinkedIn, will repost it. So solve the assignment. If you are familiar with the Linux, or if you are not familiar with the Linux, try to solve it. I will also attach a Linux guidebook in the resource directory. You already know what this resource is. So basically हमने रिसोर्स का सेक्शन बना रखा है। आप अगर किसी भी वीडियो पे जाओगे और वहाँ पर आप उसके चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, एंड यूजिंग दैट लिंक आप उसका चेक कर सकते हो। वहाँ पर आपको एक सेशन ट्रैकर मिलेगा, उस सेशन ट्रैकर में आपको रिसोर्स का लिंक मिल जाएगा। ओके, सो यू कैन चेक इट आउट हेयर, लाइक दिस इज द ट्रैकर, you can open it, and in this tracker you will find everything, all the classes link and the drive link. You can open the drive, and in the drive section you will find out the folders. So the assignment one will be uploaded here. There is already, sorry, there is already one assignment which you can check it out for previous session, and the session and this assignment will also be uploaded by tonight, and the notes will be available here.
for Linux guidebook. Okay, so make sure you will bookmark this particular link, so you will never miss any assignment or any notes for your sessions. So in that assignment I will have 10 questions for you. So if you are familiar with, try to solve it. If you not, so you can solve this particular one section because it is based on today's session, and the next one you can use when we take the session on Monday. Okay. So now if you have any question, you can ask me. Hopefully you will enjoy the session. So tell me if a particular command you want to add me in the session, or you need us or get some insight for particular things. You can tell me in the comments so I can add into the next session, which will be having on Monday 14th of July at same time. So I thank you everyone for joining this stream, and it's really fascinating to see like all of you find some time to join the stream and trying something new or learning something new. So hopefully these sessions will help you in your journey. I will try to make these sessions as informative as much so you can learn a lot. That's why creating assignments or notes or the slides is also available, like whatever slides I'm showing you in the session, it is also available in the drive link. You can check it out, and share as much as you can on your LinkedIn. Tag me in the LinkedIn on your solutions or the clip of this session. And there is one more thing I have. You can watch the previous session as well. There is a giveaway announcement. So my next pen testing workshop, top three person I will choose, and you will get the free seat for that particular workshop. So what you have to do, you have to take a clip from these sessions or previous sessions, post it on LinkedIn and tag me with some hashtag. So you will and then I will announce the winner on 18th of July. So that will be a advantage for you to join my paid network pen testing workshop, but you will get the seat for free. So I will choose the top three person with using some random techniques. So what you have to do, you have to take a snap or take a clip from this video or previous video, post it on LinkedIn, tag me, and that's it. The workshop will be started on the month of August, so you will get you will have a chance to get the seat for free. So without further delay, thank you everyone. I see no more questions here. If you have any, so we have 2 more minutes. If you want to ask me anything, you can ask me. Thank you Jolie, thank you Hans, thank you Infotech, thank you Monica for your answers and your actively participation. Thank you, Khan. Thank you, Binary Entity. Thank you, Anvesh. Thank you, Rohit. So, okay. So, Rohit has one question. Like, Rohit having a commerce background. So, can I do it and get a good job? Yes, Rohit, you can do it. So, background is not the barrier. So, Khan is saying he has done the first assignment and uploaded it on the LinkedIn. So, tag me also. Tag me on that assignment also, so that's only then I can see your assignment. Tag me in that assignment, and you can put out the link of these streams, so the connection of yours can also take advantage. Okay, so I see no more questions here, so take care, bye bye, good night, see you on Monday.